Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this chapter or in this lecture of nutrition we will be covering that how the plants they attain their nutrition, what sort of mode of nutrition exists in them. So we have covered the portion of the plants already. Now we are starting off with mode of nutrition in the animals. So as usual, by the end of this lecture, you should be able to answer the following questions, starting off with how you can classify the animals on the basis of modes of nutrition. Specifically, then what is the meaning of the term detritivores, what sort of organisms are included in this heading. Then we will also highlight other different types of uh, animals that includes herbivores, carnivores and omnivores. We will cover up their different features and we will try to understand how all these different types of animals they are different from each other when it comes to nutrition. So we will start off this lecture with classification of animals on the basis of different modes of nutrition. So first of all we have the detritivores, those animals that attain nutrition from the decomposition of dead matter. Then we have the carnivores, those animals that feed on other animals. Then we come to the herbivores, that are those animals that eat plants in order to obtain their nutrition. Then we have the omnivores that feed both on animal and plant source in order to gain their nutrition. इसके अलावा we have filter feeders that are further divided into fluid feeders and the macrophagous feeders. ठीक है, तो इनके बारे में भी हम कवर करेंगे कि what filter feeders actually are, और इनकी जो further सब classification है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है. And lastly we will discuss the parasitic mode of nutrition that exists within different एनिमल्स एज वेल. तो जनरल कॉन्सेप्ट का तो हमें ऑलरेडी आइडिया है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं. इसमें हम पढ़ें कि किस किस्म के जो एनिमल्स हैं दे बिहेव एज पैरासाइट्स, जिसमें कि हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट एंड ऑल्सो एज एंडो एंड एक्टो एंड द एंडोपैरासाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन वेयर दीज specific parasites are going to exist. So in this particular lecture we will cover in detail the detritivore, carnivores, herbivores and the omnivores in detail, and in our next video we will highlight how filter feeders and parasites they attain nutrition from other animals. So first of all we have the detritivores. The word that has been taken from the term detritus, that actually means waste matter or the decomposed matter. So these are basically those organisms that attain nutrition through the waste matter that has been decomposed, either it's of the plants or the animals. The most common example are the earthworms that burrow through the soil. ठीक है, तो soil से जब ये आपको पता है कि during rain obviously they come out onto the surface. तो उस process में when they are burrowing through the soil they are going to ingest the small fragments of the decomposed or the waste matter of either any small plant or animal. Then we have the herbivore animals, that are those animals that attain nutrition from different types of plants. इनके केस में जो हमारे पास डिफरेंट मैमल्स आ जाते हैं दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रोडेंट्स एंड दे आर आल्सो हूफ्ड मैमल्स सच एज हॉर्सेस, कैटल्स, बफलोज, शीप्स. ठीक है, हूफ्ड मैमल्स का आपको अंदाज़ा होगा कि इनके जो फीट होते हैं दैट हैव हार्ड सरफेस. ठीक है, इवन केस इन केस ऑफ हॉर्सेस या बफलोज जो हैं उसमें अगर आपने अक्सर देखा होगा कि दीज मैमल्स देयर फीट्स दे हैव अ हार्ड सरफेस दैट इज़ नोन एज द हूफ. ठीक है, उसके अलावा जो इनके टीथ हैं ख़ास तौर पे जो पोस्टीरियर टीथ हैं दैट आर द प्री मोलर्स एंड द मोलर्स, दे हैव ग्रेटर सरफेस एरियाज.
greater surface areas क्यों हैं? Because they are going to eat plants, so they need good tooth surface area for proper grinding of these plants. ठीक है, इसके अलावा इनमें जो canines हैं they are absent, incisors are present but there are spaces between the incisor and the premolars. ठीक है, तो premolars और molars जो हैं they are basically more well developed in case of herbivores. ठीक है, इसके अलावा इनमें दो जो सब ग्रुप्स आ जाते हैं herbivores में, they are the grazers and the browsers. Grazers are basically those animals such as buffaloes that attain food from small grass. ठीक है, so they use small grass for their nutrition. इसके अलावा जो browsers हैं जैसे कि जिराफ है, it feeds on leaves that are slightly harder than the grass. So this is the basic difference between these two types of herbivore animals. Then we come to the carnivores, those animals that feed on other animal species. So they mostly use their teeth to catch their prey. Specifically इनमें जो canines होते हैं they are very much well developed, that are used for tearing off their prey. ठीक है, इसके अलावा obviously premolars and molars once again they are very much well formed because those premolars and molar surfaces are used for proper grinding of the food. ठीक है, तो canines में जब हम आते हैं तो there is a phenomena that exists that is known as the predator prey interaction. ठीक है, that is very critical when it comes to the maintenance of an ecosystem. तो इस टर्म के बारे में भी इसी लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट दैट एग्जैक्टली इज़ एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकली. फिर हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर प्रीडेटर्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स दे आर इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रे. Finally, we have the omnivores, that are those animals that attain nutrition by eating both animals and plants. तो इसी हिसाब से जो इनके टीथ हैं दे आर बेसिकली मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली. यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम इनके टीथ की बात करें तो हमने देखा था कि canines were very much well modified in case of the carnivores along with their premolars and molars. यहाँ पे भी canines they are present and they are well developed but not as well developed as in the canines, because they are not only going to survive on meat or other animals but they are also going to intake the plants. So their canines are there but not that well developed as is the in case of the carnivores. हर्बीवोर्स की बात करें तो हमने देखा था कि जो प्री मोलर्स और मोलर्स वाले जो टीथ हैं दे हैव ब्रॉड ओक्लूजल सर्फेसेस जहाँ से उन्होंने ग्राइंडिंग करनी. तो इनके भी केस में ऑब्वियसली प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर प्रेजेंट, दे हैव ब्रॉड सर्फेसेस बट नॉट एज ब्रॉड एज इन केस ऑफ दीज हर्बीवोर्स प्लांट्स या इन केस ऑफ कार्निवोर्स. ठीक है, सो इंटरमीडिएट केनाइन और प्रीमोलर्स और मोलर्स की डेवलपमेंट होती है अलॉन्ग विद द इंसाइजर्स एज वेल. ठीक है, इस तरह की जो एक्सट्रीम वेल डेवलप्ड या बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड आप कह लें केनाइंस होते हैं इन केस ऑफ द कार्निवोर्स एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स इन केस ऑफ हर्बीवोर्स दैट इजंट देयर. सो कॉमन एग्जांपल्स में बियर्स, फॉक्स, रैट एंड द ह्यूमन बीइंग्स that eat both plant and animals for the source of their energy. Lastly, we will discuss the predator-prey interaction that is a common phenomena in case of the carnivores. First of all, we will define what predators actually are. These are those animals that kill and eat their prey. ठीक है, वो एनिमल that is killing another one, that is the predator, and the one that gets killed and eaten up is known as the prey. ठीक है, अब ये इंटरेक्शन जो है किसी भी इकोसिस्टम में इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी भी एक स्पेसिफिक स्पीशी की इतनी तादाद ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही
दूसरी एक स्पीशी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसकी एक एग्जांपल जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें तमाम ऐसे प्रेडेटर्स को जो है वो रिमूव कर दिया गया जो कि बेसिकली रैबिट्स को जो है वो किल करके जो है उनको ख़त्म कर रहे थे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ कि जब रैबिट्स दे वर नॉट गेटिंग किल्ड बाय देयर प्रीडेटर्स, तो व्हाट द रैबिट्स डिड दैट दे डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द डिफरेंट फार्म्स। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर फार्मर्स देयर फार्म्स गेट अफेक्टेड, अगर फसलें तबाह होंगी तो उससे क्या होता है नुकसान के ऑब्वियसली फूड इनटेक फॉर अ स्पेसिफिक स्पीशी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि अगर ये प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन जो है इसको आप ख़राब करते हैं तो दैट कैन ऑब्वियसली लीड टू डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम, जिसकी जो मेंटेनेंस है दैट इज़ a very important phenomena of the nature. That's the end of our video. Do like our video, share it with other students as well. In the comment section, do mention if you have any question relevant to the topics we have covered in this lecture. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.